मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today is 14th session. लेकिन ये 13 session नहीं। I mean yes, oh okay, this is 15th session. Oh great. बार तो अच्छी बात है, मैं एक स्टेप और आगे हो गए। Today we'll do some practice management MCQs. This is one area which is not covered in our syllabus or CME course. So it was very difficult to make MCQs in this area. तो एक ही ऑब्जेक्टिव है या कोई और भी है? ये रहेगा, ये आप लोग को ध्यान Starting with the first MCQ, you are a confident physician and you trust your management abilities. Which type of practice would be most suitable for you? ऐसा फिजिशियन जिसको अपने ऊपर एतमाद हो। जो रिस्क फिजिशियन अगर एक कॉन्फिडेंट फिजिशियन है, वो ट्रस्ट हिज एबिलिटीज, ट्रस्ट हिज मैनेजरियल स्किल्स, इज एबल टू टेक रिस्क, ठीक है। एज ए जनरल रूल ऐसा फिजिशियन जिसको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर, उसको उसके लिए क्या सूट करेगा? सिंपलेस्ट वन, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, बहुत रिस्क भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली उसको ये सकती है बिकॉज दीज पीपल, द कॉन्फिडेंट पीपल नीड सम अथॉरिटी, फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं, ग्रुप प्रैक्टिसेस वो मजबूर होती है। सोलो प्रैक्टिस तो हमें पता है, दिस इज सिंगल मैन प्रैक्टिस, द फिजिशियन है, वन मैन शो, दिस इज द फिजिशियन मेक्स ऑल द डिसीजंस, ही इज द बॉस, ठीक है, सारा उसकी मर्जी से होता है। सिंगल स्पेशलिटी ग्रुप प्रैक्टिस मीन्स स्मॉल single specialty, like a group of family physician working together and group of ENT people working together, group of ophthalmologists working together, so they all have the same specialty, so they bear the expenses, सारा कुछ करके जो net profit होता है वो divide करते हैं। मल्टी स्पेशलिटी ग्रुप प्रैक्टिस मीन्स देयर डिफरेंट स्पेशलिस्ट इन द ग्रुप, उनके अपने छोटा सेटअप बना के वो प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन दे शेयर द इनकम एंड दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। Hospital owned practice means like satellite center of any hospital. Suppose Fatima Memorial opens a dispensary or a health center in some area. The doctors are employee of the hospital, and जी आगा खान की own practice है इस तरह की, वहाँ पे family physician काम करते हैं। मोस्टली FCPS है, लेकिन वो ना हो तो MCPS वाले होते हैं। ऐसे वो बड़ी डिबेट है, what should be the fate of family medicine FCPS? Either they be educating others or should they be doing such hospital-based practices? There are only few FCPS people in Pakistan. अगर वो भी जाके सिर्फ jobs करने लगे तो education कौन करेगा? They should be involved in CME of family physicians. दूसरे जो family physician है, 1 लाख family physician है without residency programs. तो ये समझ में आ गया किस तरह से हैं, इनके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। यू वैल्यू योर लाइफस्टाइल एंड यू आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल टाइम फॉर योर करियर। स्पोर्ट्स अपनी खेलनी है, एंजॉयमेंट करनी है, शाम को तफरीह करनी है, अपनी कोई हॉबी है तो वो भी करनी है आपको। विच प्रैक्टिस मॉडल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर यू? सोलो प्रैक्टिस में अपनी CME का टाइम नहीं मिलता, पर्सनल लाइफ का कहाँ टाइम मिलेगा? योर टाइम इज द डिस्पोजल ऑफ पेशेंट्स। किसी वक्त कॉल आ जाए आपको, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। इसमें एडवांटेजेस हैं इन सिंगल ग्रुप मल्टी स्पेशलिटी,
दैट यू कैन टेक योर टाइम ऑफ, अपने टाइम टेबल बना के सारा कुछ कर सकते हैं, नॉट इन सोलो प्रैक्टिस। नहीं, आपकी प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिस इनकम डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें। हाँ ठीक है। हॉस्पिटल ओन में तो यू आर एम्प्लॉय, यू कैन टेक योर अर्न लीव, सिक, कैजुअल लीव्स। हाँ नहीं, प्लान करते हैं जी, हाँ कर सकते हैं। आप बीमार हो तो कंपनसेशन हो सकती है, छुट्टियों पे जाना चाहे, आपकी प्रैक्टिस नहीं सफ़र करती कि आप छुट्टियों पे गए तो पैसे ख़त्म हो गए। There has been a constant sewage spillover in front of your clinic and you decide to change your area of practice and residence। ठीक है, क्लिनिक के सामने बड़ी गंदगी है, आपने चेंज करना है। What aspects would you consider in finding a new area of your practice? नई जगह क्लिनिक ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, क्या क्या चीजें देखेंगे? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी, वुड यू कंसिडर दैट और नॉट? जिस इलाके में जा रहे हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। क्लाइमेट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, अच्छा वो भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। सो अब अगर इस तरह के ऑप्शन हो जी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। सपोज आपको जुम्मा पढ़ने के लिए वहाँ 10 मील दूर जाना पड़ता हो। अंग्रेज ही कहते हैं कि इसका ताल्लुक है, लेकिन आप जहाँ सेटल होना चाहते हैं वहाँ की फीचर्स आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम जी। वहीं से सारा कुछ किया हुआ है। नहीं, सर्वे नहीं करने चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वो अपना चर्च देखेंगे। सपोज आप चर्च देखेंगे, अगर जूस हैं वो अपनी जगह देखेंगे, मुसलमान है तो मस्जिद देखेंगे, मस्जिद ही नहीं आपका। केस MCQ नंबर, सेम केस, यू वांट टू चेंज योर प्रैक्टिस, नई जगह ढूंढ रहे हैं आप। विच एस्पेक्ट वुड यू कंसिडर इन फाइंडिंग ए न्यू एरिया फॉर योर प्रैक्टिस? द क्राइम रेट इन द एरिया, शॉपिंग फैसिलिटीज, एजुकेशनल सिस्टम, रिक्रिएशनल आउटलेट्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारी चीजें देख के फिर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं। दिस सम बेसिक रूल्स ऑफ फाइंडिंग अ प्लेस फॉर योर प्रैक्टिस। Same case, you have gone to an area in search for place for practice. There are many industrial workers and officers in that locality, and most of them are health insured. Which type of practice would be most suitable for you in order to get the insurance contract of these workers of the locality? The hospital's own practice, उसमें तो आप एम्प्लॉई ही होते हैं, एक नहीं अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं। सही जी, बिल्कुल ठीक है। सोलो प्रैक्टिस तो आउट, सोलो प्रैक्टिस को इंश्योरेंस कंपनीज प्रेफर नहीं करती जी। हाँ, देयर शुड बी मैनी सर्विसेज अंडर वन रूफ। सही, बिल्कुल वही डॉक्टर अकमल की बात बिल्कुल सही है। सो इट इज द इंश्योरेंस कंपनीज लाइक द मल्टी स्पेशलिटी ग्रुप्स विद सम फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, ताकि उसको वो कर वहीं पे बहुत कुछ करते रहें। ठीक है, सेम केस, यू वेंट टू अनदर लोकेलिटी। अब ये घूम रहा है बंदा, अपने क्लिनिक के सामने गटर का पानी आया तो पूरे शहर में ढूंढ रहा है कि, तो वो पूरे शहर में नई जगह ढूंढ रहे हैं। यू वेंट टू अनदर लोकेलिटी वेयर देयर आर लॉट ऑफ नॉन इंश्योर्ड पीपल ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास। Which practice would be financially most secure if you decide to settle there? बहुत गरीबों की बस्ती है एक, वहाँ पहुँच गए आप क्लिनिक की जगह देखने के लिए। ए सोलो प्रैक्टिस, आप
हम आपके गरीब लोग हैं, आपको पे नहीं कर सकेंगे, आपकी क्लिनिक में आधे मरीज तो नॉन पेइंग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ये एनालिसिस अच्छी है कि तनख्वाह वाली जॉब कर लें जिसमें पेशेंट पे ना करते हो। ठीक है, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन पेमेंट स्टेटस ऑफ द क्लाइंट्स। तब आराम से अस्पताल की जॉब हो जहाँ को नुकसान का खतरा ना हो, जॉब वाली। हाँ, सेम केस। अब आप घूमते घूमते किसी और लोकेलिटी में आ गए, यू विजिट अनदर लोकेलिटी वेयर ऑल द रेजिडेंट्स बिलोंग टू हाई सोशल क्लास, बिजनेसमैन है, रिच फैमिलीज हैं सारी। देयर इज ऑलरेडी वन गवर्नमेंट एंड वन प्राइवेट हॉस्पिटल इन द एरिया। विच फाइनेंशियल मॉडल वुड बी मोस्ट रिवार्डिंग इन दिस लोकेलिटी? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फी फॉर सर्विस, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे लोग पैसे दे सकते हो, सिंपलेस्ट एंड शॉर्टकट इज फी फॉर सर्विस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोलो प्रैक्टिस? बहुत से लोगों की क्लिनिक चलती भी नहीं है, जरूरी नहीं है इनकम ज्यादा हो। बी, ठीक है, all the income can vary, the overhead cost can vary, rules and discipline can vary, but there is one thing which does not vary, is the autonomy in decision making. Which one is not a feature of solo practice? Easy hiring and firing of staff, easy financial process, ये भी है, better doctor patient relationship, little need to understand with need of understanding with the staff, none of the above. Because यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा परमानेंट होता है। सुना होगा कि 20 साल से मेरे साथ डिस्पेंसर है, ये नर्स मेरे पास 25 साल से हैं। तो इट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द स्टाफ एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर। बताए बगैर ही आपका स्टाफ इतना समझदार हो जाता है कि वही बातें पेशेंट से करते हैं। डॉक्टर आफ्ताब की एंट्री कैमरे में हमेशा होती है। Which one is the most important feature of single specialty group practice? Easy maintenance of medical records, easy decision making, compensation to doctor during vacation, medical cover to patients during vacations, CMD. इजी मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जब ग्रुप हो। एक सिंगल सोलो प्रैक्टिस है उसका रिकॉर्ड आसान होगा, या एक ग्रुप प्रैक्टिस का जहाँ बहुत से डॉक्टर। सोलो इज सिंपलर। इजी डिसीजन मेकिंग, नो देयर आर अदर पीपल्स इन्वॉल्व, सबसे पूछ के देयर आर मीटिंग्स और कमेटीज, उसके बाद ये फैसला होता है। इसमें ये फायदा है कि इस कंपनसेशन टू डॉक्टर ड्यूरिंग वेकेशन, तो ये फायदा नहीं, आपको भी कवरेज है, यू ऑल्सो गेट कंपनसेशन। जी, इट इज ग्रुप में सपोज दे आर ऑल फैमिली फिजिशियंस, कि एक फैमिली फिजिशियन नहीं है, द अदर फैमिली फिजिशियन कैन टेक केयर ऑफ। ठीक है, वो एक या सारे ENT वाले हैं तो एक नहीं है तो दूसरा कवर दे देगा। पेशेंट्स को भी फायदा, आपको भी फायदा। आप बीमार हो गए या जाना पड़ा कहीं पे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या आपका MRCGP एग्जाम है, आप कहीं चले गए, तो पीछे जो लोग हैं वो कवर देते हैं। What is the most important advantage of multi-specialty group practice? Low overhead costs, lesser conflicts of interest, better prospects for corporate insurance contracts, quick decision making, better coverage of patient during vacation. ठीक है जी, इसको देखिए, ओवरहेड कॉस्ट कब इनकी ज़्यादा आ जाती है, और मल्टी स्पेशलिटी, हर एक को अपनी नर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, पंखे चलेंगे, AC चलेगा, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट्स, वो इतनी चीज़ें आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत होता है। ठीक, डिसीजन मेकिंग डिलेड है, बेटर कवरेज फॉर पेशेंट नहीं है, कवरेज फॉर द डॉक्टर तो अच्छी है। तो सी नहीं,
नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आता है। नहीं, कोई एक ज्यादा मरीज देख रहा है, एक ईएनटी वाले ने बच्चों को देख लिया, पीडियाट्रिक और उसका ईएनटी का क्लैश आ गया। हेपेटाइटिस मीडिया पीडियाट्रिक्स वाला कहता है मैं देख रहा हूँ, फैमिली फिजिशियन कहता है मैं देखूंगा, ईएनटी वाला कहता है मैं देखूंगा। What is the most important disadvantage of group practice? यही है, बाकी चीजें तो आप कर सकते हैं। कंपेंसेशन पैकेज अच्छा होता है ग्रुप प्रैक्टिस में आपके लिए, रिस्क कम होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं चलती, बाकियों की चल रही है, तो इनकम शेयर हो जाता है। हाई ओवरहेड कॉस्ट भी है, लेकिन यू कैन कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट। सी लैक ऑफ ऑटोनॉमी, while the autonomy in decision making was the strength of solo practice। जी ये क्या वाले हैं सारे जी 15% में से हैं। Which type of practice mostly has the least overhead expenditures? सही, इसीलिए सारे पाकिस्तान वाले सोलो प्रैक्टिस करते हैं। इजीली इसमें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, कभी किसी में कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ सकता है। बाहर भी वेरी पॉपुलर, इट इज़ वेरी पॉपुलर। हॉस्पिटल ओन में तो आपका कोई ऐसा कोई है नहीं, और खर्चे आते हैं आपके। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स वाले होते हैं ना, जिसमें कंपनी से डीलिंग होती है, जो एक्स्ट्रा मैन पावर इज रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स, पेपर, खत किताबत बार बार जा रहे हैं, बिल फंसे हुए हैं, तो इनमें जहाँ भी कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं। Which financial model is the simplest? Insurance company plans, corporate company plans, like EFU करे, corporate डायरेक्ट कोई बैंक पे कर रहा है, या कोई डायरेक्ट कोई कंपनी दे रही है, ऑयल कंपनी है। ग्रुप प्रैक्टिस फी फॉर सर्विस, सीधा सीधा पैसे दें और खिदमत हासिल करें, शॉर्टकट। ठीक है, बस इसमें बस याद रखना है, फी फॉर सर्विस में कोई एथिकल चीज़ वहाँ आ जाती है जब पेशेंट इज़ नॉट एबल टू पे। ठीक है, वो एक ऐसी एथिकल प्रॉब्लम हमारे पास आती है। नहीं, फिर भी सपोज पेशेंट इज़ नॉट नॉन अफोर्डिंग, एथिकल प्रॉब्लम आ सकती है सोलो प्रैक्टिस फी फॉर सर्विस में। ठीक है, which type of practice is ideal? Solo practice, single specialty, multi specialty, hospital owned practice? None of the above। वो नहीं है कि there is one size which fits everybody। हाँ जी, because it depends on your own abilities, your own confidence level, risk taking और payment status of the community, सारा कुछ देख के फिर आप डिसाइड करते हैं। सिंपल सा, ज़्यादातर डॉक्टरी के नहीं है, इधर मैनेजरियल थिंग्स। द फैमिली प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस हैज इट्स रूट्स इन विच मॉडल ऑफ प्रैक्टिस? हमारी जो फैमिली फिजिशियन की जो प्रैक्टिस है, हाँ, इसके रूट्स कौन सी वाली में है? सोलो प्रैक्टिस ट्रेडिशनल फैमिली प्रैक्टिस है, हर डॉक्टर का अपना सेटअप है, उसकी पर्सनल चीज़ें उसमें आती हैं। बट विद मॉडर्न कंप्यूटराइजेशन, कॉरपोरेट कल्चर और फाइनेंशियल रिस्क, तो पीपल आर मेकिंग ग्रुप्स। यूजुअली वो उन ममालिक में, अमेरिका वगैरह में, व्हेन देयर आर थर्ड पार्टी पेमेंट्स, इंश्योरेंस पे कर रही है, कंपनी पे कर रही है फॉर द पेशेंट्स, और हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी से पैसा लेके पेशेंट्स पे सर्व करते हैं, वहाँ पे फिर ग्रुप कल्चर इज प्रॉस्परिंग। अमेरिका में तो सोलो प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है, बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं, इसलिए। So roots of family medicine are in the solo practice, but these are the modern things, the insurance plans और सारा कुछ।
you read in the newspaper that a very large multinational health insurance company is launching its services in your area. Your wife insists that you should also try to get the contract with the company. Which type of practice would you like to adopt in order to increase the likelihood of getting the contract? मल्टी स्पेशलिटी ग्रुप जिनका फेवरेट होता है इंश्योरेंस कंपनीज का, ठीक है, नॉट द अदर प्रैक्टिसेस. प्राइमरी केयर फिजिशियंस इंक्लूड internists and family physicians, general surgeons and orthopedicians, pediatricians and obstetricians, A and C, all of the above. Although there are specialties, लेकिन प्राइमरी केयर स्पेशलिटीज में शामिल होती हैं. फॉर इंटरनल, क्योंकि हमारे 80% ऑफ द फैमिली मेडिसिन इज इंटरनल मेडिसिन. बाकी कुछ है वो पीडियाट्रिक्स हैं, प्रिवेंटिव चीज़ें जिसमें ज़्यादा होती है, हेल्थ एजुकेशन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. जनरल सर्जन ऑर्थोपेडिक्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट नहीं है. पीडियाट्रिक्स इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इंटरनल मेडिसिन एंड फैमिली फिजिशियंस, these are called primary care physicians. इसी तरह क्या करती हैं? हाँ, वो सब करती हैं, ये उनका वो काम है, ठीक है. सो देयर primary care physicians, there we are talking about family physicians. If we are talking about primary care health providers, then it also includes nurses, the midwives, जो मिड लेवल के जो वर्कर्स हैं ना, पैरामेडिक, वो सब उसमें आ जाते हैं प्राइमरी केयर में. सो द प्राइमरी हेल्थ केयर टीम कंसिस्ट ऑफ फिजिशियंस एंड नॉन फिजिशियंस, और फिजिशियंस ओनली इंक्लूड इंटर्निस्ट, फैमिली फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ICD, International Classification of Diseases, is published by which organization? Center of CDC, WHO, National Health System, American College of Physicians, government of each country. इसकी हिस्ट्री इस तरह से, दिस इज वेरी ओल्ड थिंग. वो स्टार्टेड लास्ट सेंचुरी, 18 समथिंग में ये स्टार्ट हुआ था, और उसमें इट वाज इनिशियली दी इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है. कॉजेज ऑफ डेथ पहले में सबसे पहले था. फिर जब WHO बनी, देन इट्स आल्सो एडेड द डिजीजेस, इंस्टेड ऑफ डेथ डिजीज भी ऐड कर दी. पहले सिर्फ डेथ के लिए इस्तेमाल होता था, कॉजेज ऑफ डेथ. तो इसे WHO, इट्स इम्प्लाइज टू द एंटायर वर्ल्ड. जहाँ जिस जो कंट्री WHO में है उस पर ये इम्प्लीमेंट होता है. विच रिवीजन ऑफ ICD इज द मोस्ट करंट एंड अप टू डेट? 10, ठीक है, अभी तक 10th आई है. ICD describes and classifies all of the following aspects of the diseases except ये तो स्टार्टिंग डेथ कॉज ऑफ स्टार्टिंग इसी से हुआ था कि डेथ की कॉज. सिम्टम्स लाइक प्रेजेंटेशन, फीवर, दे कैन कोड फीवर का अपना कोड है, साइंस का हो सकता है, हाइपरेमिक थ्रोट है या चेस्ट कंजेशन की, या डायग्नोसिस होती है. इस क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, इसमें यहाँ तक होता है कि व्हाट इज द प्राइमरी डायग्नोसिस, व्हाट इज द एसोसिएटेड डायग्नोसिस. एसोसिएटेड डायग्नोसिस तक काउंट होती है, इसमें हर चीज़ अलग काउंट होती है. प्रोग्नोसिस नहीं करते नहीं, आप SID में नहीं, उसके नहीं है ना अब डिजीज की. Which aspect of clinical encounter, because prognosis depends on your own factors, the factors of the patient, factors of the disease, stage, treatment, इस तरह से. Can be classified according to ICD. There are 3 large volumes
ICD-10 के 3 वॉल्यूम हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें भरी हुई हैं। ठीक है, फिर क्लासिफाइज केमिकल इंजीनियरिंग। Clinical encounter means interaction between a physician and a patient. Interaction between the doctor and the patient, वो clinical encounter होता है। जैसे पुलिस के डाकुओं के साथ encounter होता है, जैसे drug intake, different drugs are coded differently. Each drug has its code. आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज ये बेंजोडाइजेपिन इंटेक के साथ आया है, ये ट्राइसाइक्लिक इंटेक के साथ आया है। लाइक केमिकल इंजरी, दिस अल्कली इंजरी, एसिड इंजरी, ठीक है, या कोई दूसरा जो केमिकल्स हैं, सपोज द पॉइजन्स हैं, द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, इस तरह के। पैथोलॉजीज, दिस इज कैंसर, दिस इज इन्फेक्शन, दिस इज इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ये सारे रट्टे वाले MCQ। ठीक है। Which of the following strategies is best for organizing and storing drug samples? Arrange sample alphabetically. Set aside 10 minutes at the end of each day to straighten the sample area. Store samples in exam room for easy access. Allow drug reps unlimited access to your sample. Or maintain a log to track the samples you received and dispensed. हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अल्फाबेटिकली दे आर अरेंज बट यू डोंट नो हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर और आपने कितने डिस्पेंस किए और कितने आए, unless you have the log. ये तो लॉग है, नॉट छोटी मोटी पता नहीं। देखिए क्लिनिक के बाद बस एट द एंड ऑफ क्लिनिक 10 मिनट्स किसके पास होते हैं? It's the use of samples are during the clinic when you are giving to the patients. So the correct option is E. Simple maintaining log by anyone who writes the medicines which are coming into their store or going out. Next. When is it advisable to lock your sample area? At all times. मरीज को दवाइयाँ देनी है तो लॉक है, सारा दिन लॉक पड़ा हुआ है। At all times. All times does not make any sense. D. When it contains medication that could be abused. Yes. और कोई ऑप्शन? रात को खुला छोड़ेंगे? At night there is your family physician, at night your clinic is closed. Sample area क्यों खुला छोड़ेंगे? मतलब उसमें ताकि मरीज पोर इन कर सके, जो वो देके जाए वो पोर इन कर सके, उसमें डाल सके। ये सारे डॉक्टर आफ्ताब याद कराना। हाँ, जब आप ड्रग रैप आ रहे हैं तो उस वक्त क्यों बंद करेंगे? उस वक्त तो खुला होना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं दोबारा। When is it advisable to lock your sample area? ठीक है ना, when drug reps are visiting आपको नहीं करना है लॉक, तो आप लॉक नहीं करेंगे ना, रॉन्ग ऑप्शन है ना। आप एडवाइजेबल रात को
मुझे नहीं इट्स बी एंड डी, इट्स बी एंड डी पीछे वही तो हम कह रहे हैं ना। आप कह रहे हो, आपका सवाल है when it is advisable to lock your sample area, that means it is advisable to lock your sample area when drugs are visiting your office. क्वेश्चन गलत हो गया। अनलॉक नहीं वैसे पढ़े। अच्छा एक लेट्स टेक यू सेंटेंस। It is advisable to lock your sample area when drugs are visiting your office. True or false? It's wrong. तो फिर wrong आप कह रहे हैं। Oh sorry, it's not B and it's A and D. This A and D है, ये तो क्या है? बस आगे चलिए। Choose पूरा खराब है। sorry रात को क्या मसला है? हाँ रात को क्या? रात को हाँ जब क्लिनिक नहीं चल रही है तो अब छोड़ देते हैं इसको। सो सॉरी आई थॉट इज ए एंड डी, इज ए एंड डी। नहीं ये था ए एंड डी है, ए एंड डी है। नहीं मैं इसके नीचे देखा ही नहीं। जब इसमें जॉब हो गया ए एंड डी, इट वाज ए एंड डी, ए एंड डी है वो। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बाद में हमारे पास जब आएंगे ना इसको ठीक किया जा सकता है। अभी ठीक कर देता हूँ। What is the most common complaint of patients about the doctor? Spend enough time with me. Even अगर हाँ see जी doesn't listen to me. Patient का listening is a skill. नहीं हाँ बिल्कुल आपने तो बात ही नहीं सुनी, डॉक्टर साहब तो कुछ बात ही नहीं सुनी, तो सुनते नहीं है वो। Which of the following strategies is likely to improve communication between elderly patients and their doctors? Stand throughout the visit to convey authority. Don't talk down to patients by replacing medical jargon with simpler terms. Write down instructions for patients to take home. Insist that elderly patients bring a family member or friend with them to their visits. Repeat your instructions multiple times until the patient says she understands. बार बार हाँ डिमेंशिया में लिख के देंगे, वो भूल जाएगा, 10 दफा बता दें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which of the following is our disadvantage or disadvantages of encounter forms? Encounter forms are simple forms जो आपने बनाए होते अपनी क्लिनिक के लिए, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, फाइंडिंग, डिफरेंशियल, और अपना अपना फॉर्म बनाया होता है। There may be different forms for antenatal clinic, there may be different form for surgical procedure, different form for pediatric patient, different form for elderly, different form for diabetes and hypertension. ठीक है, आपने हर चीज का अलग फॉर्म बनाया हुआ है। Have the right form at the right time can be challenging. सर्जरी प्रोसीजर पे आपको पीडियाट्रिक्स का मिल रहा है, पीडियाट्रिक्स पे औरत एक गायनी का मिल रहा है। They slow down the note taking process. No, they don't remind you of the important questions to ask. Remind ही करते हैं ये। They require stocking, filing and retrieving many forms. So the correct answer is A and D. Which of the following approaches to performance measurement minimizes the burden of data collection and produces reliable results? Prospective data collection using homegrown tools, prospective data collection using the existing tools, chart review conducted by physician, chart review conducted by an outside firm, claims data analysis conducted by
of staff. सारी प्रैक्टिकल बातें सबको आती हैं, मतलब आप लोग को प्रैक्टिस मैनेजमेंट की चीज बातें ना उससे नहीं परेशान होना चाहिए. आई थिंक यू विल डू वेरी वेल. देखिए आप प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, 25-20 साल से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू नो ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स. नए टूल्स बनाने चाहिए उनके लिए, पुराने जो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं उसी पे फ्यूचर में डाटा कलेक्ट कर लें या किसी और से. मिनिमाइजेज द बर्डन्स ऑफ डाटा कलेक्शन. सवाल दोबारा पढ़ें. परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिनिमाइजेज द बर्डन ऑफ डाटा कलेक्शन एंड प्रोड्यूसेस रिलायबल रिजल्ट्स. कैसे रिजल्ट तो अप्लाई भी करते हो आप. सपोज योर डेली डाटा कलेक्शन इज बेस्ड ऑन वन टूल एंड आप एनालिसिस दूसरे टूल से कर रहे हैं, फायदा क्या? जो भी टूल है आपका एग्जिस्टिंग, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसी पे आपको करना है. जी ठीक है. सो जो भी आपके टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं योर क्लिनिक, उन्हीं पे डाटा कलेक्ट करें, स्पेशली अलग अलग से नहीं करने चाहिए. ठीक है. सो इट विल बी मोर रिलायबल एंड इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ डाटा कलेक्शन. तो बार बार पीछे फाइलें खोल रहे हैं. सो इन अ प्रोस्पेक्टिव वे यूजिंग द सेम टूल्स आप अपना डाटा कलेक्ट करें एंड देन मेजर द परफॉर्मेंस. ये सर आई ओपनिंग क्वेश्चन है. हाउ ऑफन डू फिजिशियन अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ब्रांडेड ड्रग्स. ये हमें तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक माउथ क्लोजिंग क्वेश्चन डाल दो. ये ओपनिंग तो डाल रहे हैं, माउथ क्लोजिंग भी डाल रहे हैं. ठीक है. दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स की फिगर है, यूनाइटेड स्टेट्स की. आप लोगों को हमें तो पता होता है ना कॉस्ट का. वहाँ जो है 90% ऑफ द टाइम when they branded products which are very expensive, they forget the price of the brand drugs. ठीक है. हम गुड फैमिली फिजिशियन हम तो कॉस्ट देखते हैं. वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट. हम उसी हिसाब से पेशेंट्स को देते हैं. हमारे लिए ये अप्लाई नहीं करता. If a service is denied for lack of medical necessity, what should a physician's first response generally be? Express your frustration to the health plan. This scenario applies to, suppose you have contact with an insurance company or third party payment. So, and there is you want to write some treatment or some option, medicine or test something for the patient, and it's not covered in their plan. So the answer is E. Contact the health plan medical director and see if you can provide additional information to support the medical necessity. और बाकी को देख लीजिए एक नज़र. Express your frustration. No, you should not be frustrated at all. Encourage the patient to file his or her own appeal. तो केस लड़ता रहेगा, उससे बात उसको पेशेंट को क्या पता नहीं उसको कैसे डील करते हैं. We did not help the patient. Get a copy of the patient's contract with the health plan. File a complaint with the state insurance commissioner, and last is contact the health plan. डायरेक्ट उससे बात करके डायरेक्ट बात करें कि हाँ कि दिस पेशेंट नीड्स दिस ट्रीटमेंट एंड यू प्रोवाइड एविडेंस, और आप उसे अप्रूव करवा लेते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ताकि पेशेंट का काम भी हो जाए. Which of the following is not advisable about altering previous chart notes? So it is not advisable about altering. Don't alter the original text. Make any additions obvious. If changes are needed, replace the entire original note with a new one. Include the date and time of any subsequent entries. Explain why any new information was omitted originally. Is not advisable. Is not advisable. It is not. नहीं, you mean you alter the original text? नहीं.
सारा नहीं बदलना है, ओरिजिनल टेक्स्ट को उसी तरह रहने देना है। ओरिजिनल टेक्स्ट को कोई एडिशन करनी है, इट शुड बी ऑब्वियस। और आपने क्यों पहले में नहीं ये मिस किया, रीज़न आप लिख देंगे कि बिकॉज एनी रीज़न। और जब भी चेंज किए हैं टाइम एंड डेट उस पर लिख देंगे, ठीक है। और ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है कि सारा डॉक्यूमेंट ही बदल दें, एविडेंस ही चेंज कर दें। What is the most common underlying cause of malpractice suits against primary care physician in United States? Failure to supervise or monitor the case, failure or delay in referral, medication error, diagnostic error, improper behavior. Primary, we are talking about primary care physician, not surgeons या इस तरह जिस they are very well behaved, they have learned their communication skills. D, yes. बाकी आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, इससे मिलता जुलता MCQ. What? We don't have the trends of suing the physician. हम तो ये कह देते कुछ भी हो गया, इसी में कोई खैर की बात थी, इसी में अल्लाह ने लिखी थी, ठीक है, टाइम पूरा हो गया सब कुछ। अगर हमारे यहाँ अगर ये आ जाए मेल प्रैक्टिस का, क्वैक्स वगैरह नहीं आए, व्हाट कुड बी, क्वेश्चन देखिए, कुड बी डायग्नोस्टिक एरर्स नहीं आएंगे, इम्प्रॉपर बिहेवियर नहीं आएगा। डॉक्टर तू है क्या मैं हूँ, अभी चुप कर जा। हाँ, ये MCQ मैंने खुद बनाया था, ठीक है। वो US को देखते हुए, फेलियर और डिले इन रेफरल, देयर आर मेनी केसेस व्हिच आर डिलेड, ठीक है, बहुत केस बिगड़ जाती हैं। स्टेरॉइड्स, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन। शुक्र है हमारे यहाँ ये लॉस सूट्स का नहीं है, वरना तो पेशेंट हमारी खाली उतारते हैं जिस तरह हम उनकी उतारते हैं। What factor most often prevents family physicians from providing high quality care? Understaffing, lack of professionalism, a lack of effort, diagnostic uncertainty, disorganized, hurried visits focused only on the immediate problem. जी, हमें इसमें से अब एक चूज करना है जिसमें हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। सो इट इज दी हरीड विजिट्स, जब सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम देखते हैं, बाकी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं देते हैं। दिस रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ आवर केयर। पेशेंट बहुत होते हैं, हमें 200-300 मरीज देखने पड़ते हैं। Which of the following actions is most essential to creating an efficient, productive practice? मोस्ट एसेंशियल, वो अगर हो जाए ना, उसके बगैर आपकी चाहे कुछ भी कर लें, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव प्रैक्टिस, एफिशिएंट भी हो एंड प्रोडक्टिव भी हो। अगर आपको एक चूज करना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मैनुअल रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैन बी यूज्ड, दिस इज वन टाइप ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। इट इज the team approach. Primary care physician is nurse, staff, receptionist, all work as a team. जी, हाँ, की वजह से क्वालिटी केयर कम होती है। जी, हमारी जो रिलेशनशिप है वो वन विजिट नहीं है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल रिलेशनशिप, उसमें हम कंपनसेट करते हैं। हाँ, इसलिए हम बार बार पेशेंट को देखते हैं, वी नो द फैमिली, पूरा वो हमें अंदाज़ा होता है थोड़ा बहुत। हाँ,
चल जाता है। वो है दिस अगेन हाउ टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, उसमें बहुत बड़ी डिबेट है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज मोस्ट एसेंशियल हो गया, ठीक है। हाउ शुड अ प्रैक्टिस गो अबाउट एलिमिनेटिंग वेस्ट इन द प्रोसेस। वेस्ट डज नॉट मीन कि वो कचरा है, प्रोसेस जो है लाइक रिसेप्शन इज वन प्रोसेस, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज वन प्रोसेस, फार्मेसी इज वन प्रोसेस, योर ओपीडी या क्लिनिक इज वन प्रोसेस। उसमें कोई फजूल से जो प्रोसेस है ना, unnecessary steps in the process. How should a practice go about eliminating unnecessary steps in the process? Start by comparing your practice to industry benchmarks. Cut back on the number of support staff per physician. Stop using paper. Let your practice manager design your new process. Involve your staff in mapping the current process and identify any flow problems or step that do not add value to the patients. So again, the spirit is same. It's a team management. You sit with your staff and then discuss the process. इस वक्त क्या हो रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं और इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. You do not allow the practice manager to design this for you. ठीक है, it's your staff who will be doing these processes. The other option may not be true reflective of your own processes. जब दूसरों के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? Which is not typical of cash only practice. Patients pay at the time of service with cash, check or credit card. Patients who are which is not typical of cash only practice. Cash only practice means कि आप payment for service आके पैसे दे दो, चेकअप करा के चले जाओ. इंश्योरेंस के थर्ड पार्टी प्लान्स, क्लेम्स और रीएम्बर्समेंट, ये चीज़ें नहीं होती. Patients who are insured submit their own claims. Overhead is low. Patient visits are short. Contracts with health plans are limited or eliminated. Contracts with health plans are limited. Yes, आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं, आप इंश्योरेंस के प्लान के पीछे पड़े रहें, कैश आपको मिल रहा है, कैश ही ठीक है. Patients pay at the time of service with cash, check और credit card. Yes, आप क्रेडिट कार्ड से भी कोई पे कर सकता है आपको अगर आपकी फैसिलिटी मौजूद है. Insured submit their own plan. जो इंश्योरेंस के पेशेंट हैं आपको पे करते हैं, वो बाद में रीएम्बर्स कर लेंगे, अपना क्लेम लगा के रीएम्बर्स कर लेते हैं. ओवरहेड इज लो. कैश ओनली में ओवरहेड कम होता है, ना अकाउंट्स मेंटेन करने, ना प्रोसेस बिल भेजने, बंदा बार बार भेज रहे हैं कि बिल फंसा हुआ है वो आप रिलीज करवा दो, कंपनी के पीछे भागना नहीं पड़ता. पेशेंट विजिट्स आर शॉर्ट. पेशेंट विजिट्स आर शॉर्ट. कॉन्ट्रैक्ट्स विद हेल्थ प्लान्स आर लिमिटेड. पेशेंट विजिट्स आर नॉट शॉर्ट. पेशेंट पे करते हैं तो विजिट अच्छे होते हैं, यू गिव मोर टाइम टू द पेशेंट्स. दिस इज नॉट टिपिकल ऑफ कैश ओनली. कैश ओनली पे आप पूरा टाइम देते हैं ना. हम देखा होगा, वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ पे 1 साल तक काम कर चुका हूँ. हाँ, वो करते हैं. तो पेशेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर के पास गए, उसने देखा ही, उसने जब पता चला कि ये कंपनी का पेशेंट है, 2 मिनट में वो बिल बना के फारिग कर देते हैं. This is not typical. This is typical. They pay at the time of service. This is typical. Patient who are insured submit their own claims. This is typical. Overhead is low. This is typical. Patient visits are short. No, the visits are not short. उन proper time देते हैं जो पेमेंट करते हैं. Contracts with health plans are limited. Yes, this is typical. अब समझ में आ गई? Which of the following persons would be highest priority recipient for influenza vaccine during a pandemic? अगर आपको एक वैक्सीन लगानी है तो किसको लगाएंगे?
ब्रिगेड भी था कि फायर ब्रिगेड जहाँ पे आग लगे, ये पायलट्स हों जो लड़ाई की टाइम ऑफ वॉर, एम्बुलेंस का ड्राइवर है या कुछ, तो आप किसको देंगे? ठीक है। और अगर इसको बच्चे को या बड़ी उम्र की खातून को इन्फ्लुएंजा अगर इनमें से इन्फ्लुएंजा अगर सबको हो जाए, 36 years old pregnant woman gets influenza, a government leader gets influenza, a 70 years old with one risk factor condition, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट लीडर को दे देंगे। ठीक है जी। COD में से कोई है जी। Influenza, if you recall from the previous presentations, there was risk factor age के ऊपर 2 वैक्सीन थी इंडिकेटेड थी, pneumococcal and influenza 2 थी, because the mortality is very high in elderly people because of influenza, pneumonia। ठीक है, बाकी मरेगा कोई नहीं, बड़ी उम्र वाले लोग मरेंगे। थैंक यू। वो डॉक्टर साहब वो ठीक कर